Admission process slightly favors non-engineers for sure. If we see last 5 years top sectional cutoffs, we are always scared of like math, and also students watch many more math sessions than VRC sections. आपको ज़्यादा questions VRC में correct करने हैं to clear the cutoff. This particular suggestion is more for beginners for CAT 25 or 26 who are seeing VRC section as English section. It's not English section, it checks your verbal aptitude skills. Please understand. There is this common myth that CAT exam is for engineers or someone who is good with maths should take CAT, and if you're scared of maths, I don't think you will be able to crack CAT. You must have heard these lines, isn't it? But that is absolutely not true, because today I'm going to burst all these myths that it is for engineers, somebody is non-engineer, they are scared whether they should go ahead for the CAT exam since majority of the students in IIMs will see are engineers. No, that's absolutely not true. Today I'm going to give you proof how non-engineers actually have advantage over VRC as well as CAT exam students. Yes. So let's get started. The very first thing, if we just check the admission process, admission reality check, that is non-engineers get interview calls at lower percentile compared to engineers, especially GEM, right? GEM is general engineer male. So they always push for academic diversity. For example, if we see last 2 years data, which is latest, non-engineer female got calls at 85 to 90 cutoff VRC sectional cutoff as well, whereas engineer male got in 98.5 sectional cutoff students. That means you need to understand that if you're a non-engineer, you don't have to be really scared, because you still have an advantage, isn't it? The system is in your favor the way things are. Secondly, if we see last 5 years top sectional cutoffs, we are always scared of like maths, and also students watch many more math sessions than VRC sections, because we feel, okay, if we learn certain formulas, certain steps, it is easier to develop accuracy in quants than VRC. Definitely true, but we need to understand there are more questions in verbal than quant students, isn't it? You need to understand that. For example, in verbal, we have 24 questions, whereas in quant will be getting lesser questions, right? 22 questions, right? So एक तो मुझे ये समझना है. Secondly, right, आपको ज़्यादा questions VRC में correct करने हैं to clear the cutoff, right? Whereas in quants, अगर हम last year का देखें तो 8 to 10 question में भी आपका sectional cutoff निकल रहा था. It's not like you like approximately 50% आपके questions correct होंगे तो आपका sectional cutoff निकलता है. तो even though you're mid or moderate in quants, you can still clear the sectional cutoff. And VRC is something which is equally easy or equally difficult whether you're an engineer or non-engineer. So CAT exam, first of all, does not differentiate between engineer and non-engineer, but yes, admission process slightly favors non-engineers for sure. Now VRC has more questions, as we know. That means you have to focus also almost equal or slightly more on VRC as well, because VRC sectional cutoff is slightly higher for topmost colleges like IIMs, FMS, etc. Right? So we need to understand CAT is not an engineering exam. इसको एमटेक करना है वो लोग गेट एग्जाम लेंगे, बट इज अ मैनेजमेंट एग्जाम, इसीलिए मैनेजमेंट के लिए कोई स्पेसिफिक इंजीनियरिंग स्किल या नॉन इंजीनियरिंग स्किल की कोई प्रेफरेंस नहीं है. इट इज़ फॉर एवरीवन, वेदर यू आर फ्रॉम आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, जिस भी चीज़ में आपका ग्रेजुएशन है, आप डेफिनेटली इस पर्टिकुलर एग्जाम को ले सकते हो. ऑल यू नीड इज़ अ वेरी गुड कैट स्कोर और कैट परसेंटाइल. दिस इज वॉट मैटर्स. After that, of course, your profile, engineer, non-engineer, male, female, if you have work experience, those things also matter equally. तो अगर आपको उन चीज़ों में टेंशन है, आप मेरा स्कोर कितना आएगा या मेरा वर्क एक्सपीरियंस, मेरी प्रोफाइल, well and good, work on it. But if you are scared of, अरे I am a non-engineer or something, trust me, my maths is bad, trust me, that's a very like wrong fear, I would say illegitimate fear. उसका यहाँ पे कोई मतलब नहीं है. So basically, if your maths is bad and you can easily work on VRC, you can compare, yeah? You can just see that you can balance the scale. अगर आप किसी के पास maths advantage है तो आपके पास VRC advantage है. Third very important point, students, we need to understand that what all things we need to understand. There is again this common myth that in order to be good in English section of CAT, your vocabulary has to be good, grammar has to be good. Of course, you have to be moderate in those topics because the language of questions is quite difficult. But trust me, it's less about your grammar and vocab, it's more about your reading ability. This particular suggestion is more for beginners for CAT 25 or 26
who are seeing VARC section as English section. It's not English section. It checks your verbal aptitude, students. Please understand that. आपकी basic English तो अच्छी होनी चाहिए. उसके ऊपर आपका reading कितनी strong है उसी पे depend करेगा how well you can do VRC, right? और reading strong is a habit. It has nothing to do with engineer or non-engineer. So make sure you read every day editorials, articles. Spend 30 minutes minimum every day, maybe maximum 1 hour if you're absolutely free and preparing for this exam, right? हमेशा understanding पे फोकस करो, स्पीड पे मत करो. इफ 2 की जगह 3 मिनट लग जाएंगे किसी क्वेश्चन में, वो करेक्ट हो जा रहा है तो इट्स बेटर, राइट, रादर देन आपने जल्दी किया, नेगेटिव मार्किंग किया और अपना ओवरऑल स्कोर और अपने लोअर किया. दैट इज एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल. प्रैक्टिस आरसीज रेगुलरली बिकॉज आरसी इज 70% ऑफ योर वीए सेक्शन. अल्टीमेटली व्हेन यू स्टार्ट सॉल्विंग वीआरसी क्वेश्चंस यू विल रियलाइज जितने भी क्वेश्चन है, बी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा जंबल, पैरा समरी, ऑड वन आउट, पैरा कंप्लीशन, एवरीथिंग इज ultimately checking your reading ability, that how fast you can understand the question. उसी बेसिस पे easily and faster you will get the answer. ये मैं हमेशा बोलती हूँ कि VRC is 50% about how fast you can understand the questions. ट्रस्ट मी, हमारा सिर्फ आंसर पे ध्यान होता है, ट्रिक्स बता दो आंसर की, बट अगर आपकी रीडिंग स्ट्रांग है उसकी वजह से आपको क्वेश्चन जल्दी समझ आया तो आपको ऑलमोस्ट 70 to 80% टास्क इज डन. गेटिंग दिस एवरीवन? डोंट गेस इन वीए, राइट. आरसी तो आप डेफिनेटली प्रैक्टिस करोगे, बट सिंस वीए का वेटेज कम होता है तो स्टूडेंट्स उसको कम वेटेज देते हैं, एट द सेम टाइम कम मेहनत करते हैं, इस पर कम टाइम देते हैं. एट द सेम टाइम some VA questions are TITA questions. TITA as in type in the answer, there's no negative marking, so they think इसको तो attempt कर ही सकते हैं. Of course a 0 is better than -1, so TITA must be attempted, but still if you're attempting it you will give 2 to 3 minutes, so time भी lose हो रहा है. तो again उसमें भी आप ऐसे questions pick करो जो आपको लगता है कि सही होने के chances थोड़े ज़्यादा हैं, right? and make sure आप हमेशा revise और analysis करते रहो, जितने हो सके test लेते रहो. Do not ask specifically that I am new, I've just started, should I take the test, or I've already started 3 months, 6 months back, should I take the test? Test is for everyone. From day one you have to take the tests, right? Be it any section, but VRC में for sure, because VRC is more practice based section rather than formula based section, unlike maths. तो जितनी आप practice करोगे उतनी आपकी muscle memory for those reading जो language जिस तरह की आती है उसके लिए आपकी develop होगी, and accordingly you will get good faster. If you really want to get good faster, students, consistently if you can give 30 to 45 minutes just to read editorials or CAT level language, trust me, you'll see marked improvement in your VRC score. जब भी आप अगर आप weekly test ले रहे हो तो आपको 4 weeks में ही दिखाई देगा वो difference, right everyone? Now I'm the VRC educators. In case you do not know, my name is Deepika Avasthi and I have this Super 30 batch in which 30 students will be exclusively joining my batch. अभी थोड़े से उसमें slots बाकी हैं, admissions हो रहे हैं. So if you want to be part of my Super 30 batch, use my discount code DA Live. ये मेरा अभी फिलहाल 60% डिस्काउंट भी चल रहा है, तो मेक श्योर आप इस डिस्काउंट का फ़ायदा उठाओ, राइट. इसमें आपको मेरे से पर्सनल मेंटरिंग, पर्सनल डाउट सॉल्विंग, जूम कॉल, वन ऑन वीडियो पे हम डिस्कशंस कर सकते हैं अगर कहीं पे आप अटक रहे हो क्वेश्चंस में, या इन जनरल प्रिपरेशन में मॉक एनालिसिस काफ़ी सारी. मेरे अलावा आपको कैट टॉपर्स के साथ भी सेशंस मिलेंगे. एक और आपको पर्सनल मेंटर मिलेगा, जैसे मेरी क्लासेज है फॉर एग्जाम्पल आजकल अभी आपको कुछ बातचीत करनी है, कुछ पूछना है, तो वो मेंटर अवेलेबल होगा. सो यू नॉट जस्ट हैव योर टीचर्स एज योर मेंटर्स, बट other personal mentors also who will be available for you. So please ensure आप इस चीज़ को ज्वाइन करो, ठीक है. एंड मेरे आप टेलीग्राम ग्रुप को इसको स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो. यू कैन ज्वाइन माई इंस्टाग्राम वेर इन आई शेयर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ अपकमिंग एग्जाम्स, रजिस्ट्रेशन, फीस, जो भी अपनी कॉमन क्वेरीज होती है सब चीज़ आपको इधर पे मिल जाएगी. सो दैट इज़ इट एवरीवन. थैंक यू. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एजेंडा ऑफ टुडेज सेशन इज़ टू जस्ट बर्स्ट दिस मिथ, और बेसिकली ये फियर हटाना उन बच्चों के दिमाग से जिनकी मैथ्स थोड़ी सी आई वुड से, जिनको मैथ्स से जिनको डर लगता है या उनको लगता है कि MBA इज़ ओनली फॉर इंजीनियर्स, राइट. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. MBA इज़ अ मैनेजमेंट एग्जाम एंड मैनेजमेंट इज़ अ स्किल जो बहुत कम लोगों ने अपने ग्रेजुएशन में सीखा, अनलेस द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम BBA. तो दैट इज़ वाई प्लीज़ इंश्योर कि इसमें सारे बच्चे, आपको बस ग्रेजुएशन में आपका मिनिमम 50% होना चाहिए. आप आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, लाइक ना इंजीनियर है, साइंस है, क्या है, डजेंट मैटर. आपका बेसिक एक परसेंटेज होना चाहिए ग्रेजुएशन में, एंड देन अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट योर कैट परसेंटाइल, एंड देन योर प्रोफाइल. आप क्या करते हो जब आप कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो, साथ साथ में जब इंटर्नशिप्स कर रहे हो, कोई सर्टिफिकेशन कर रहे हो, जॉब एक्सपीरियंस का कुछ है, यही सब चीज़ों के कॉम्बिनेशन पे आपका इंटरव्यू जो होगा, ये सब चीज़ों के कॉम्बिनेशन पे आपका सिलेक्शन होगा. नॉट लाइक इफ़ योर मैथ्स इज़ गुड और बैड, या आप इंजीनियर हो कि नॉन इंजीनियर हो. हाँ, आई अंडरस्टैंड इफ़ योर मैथ्स इज़ बैड, कोई भी एप्टीट्यूड एग्जाम आपके लिए फिर डिफिकल्ट होगा, बिकॉज मैथ्स एंड इंग्लिश एंड रीजनिंग आर पार्ट ऑफ एवरी एप्टीट्यूड एग्जाम, सो यू हैव टू एनी विच वेज प्रिपेयर फॉर दैट. बट गुड थिंग इज इन कैट एग्जाम
मैथ्स के आप थोड़े कम क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करोगे तो आपका सेक्शनल कट ऑफ निकलता है। तो एनीवन हु स्केर्ड ऑफ मैथ्स, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, इजंट इट, दैट आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी चाहिए, राइट, जो आपको मेंटरशिप से भी मिलेगी। खुद से हम बहुत मीनिंगलेस हार्डवर्क करते हैं जिससे कोई रिजल्ट्स कभी कभी नहीं लगते, वी फील बर्नड आउट, बट राइट इफ वी गेट द राइट mentoring, right strategy, with less hard work also we can go ahead. So do not forget to join my Super 30 batch and see you later.